वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ। एक तो हम लोग को ईमेल आती है इमी के नाम से, उसके अंदर कोई नाम नहीं होता और ना ही उन्होंने बताया होता है कि उनका नाम क्या है, लेकिन ये कि वो मेरी पिक्चर्स जो है उनको कोलाज बनाकर म्यूजिक लगाकर, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं तो अप्रिशिएट करना बनता है भाई, और अपना कीमती टाइम निकाल कर कोई आपके मेहनत कर रहा है। एनीवे, और इसके साथ साथ हम लोग शाउट आउट देना चाहते हैं शिवनाश को। आई होप कि मैंने वो नाम सही प्रोनाउंस किया हो, और 500K के लिए आपने हम लोगों को दी है शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और साथ में ये भी कहा कि मैंने अब आकर आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। भाई ये बात गलत है, पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब्सक्राइब कर दिया। और साथ में आपने क्वेश्चन भी पूछा है, जरूर हम उसका जवाब देंगे आपको, लेकिन ये कि जिस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे उस दिन हम लोग इस बात का जवाब देंगे। बाकी आप लोग भी अगर हमसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जरूर हम लोगों को ईमेल करें, फिर जिस दिन हम लोग लाइव आएंगे तो उस दिन हम लोग आपके साथ बैठकर उन सवालों का जवाब देना चाहेंगे, चाहे वो मौसम से हो चाहे वो मुझसे हो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं वीडियो जो हमें सजेस्ट की है, और वीडियो का टाइटल है एक्सपेंसिव ट्रेन जर्नी इन इंडिया, पैलेस ऑन व्हील्स एट 124 lakhs, WanderLuxe एपिसोड 9 कर्ली टीयर्स। भाई टाइटल बोलते बोलते मौसम की हवा निकलती जा रही है, इतना महंगा। एनीवे गाइस, देख लेते हैं वीडियो से पहले इस चैनल का इस वीडियो के चैनल का विजन लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा लोगी चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Good evening, madam. Welcome on board Palace on Wheels. Thank you so much. Thank you. Wow. I have seen such royal trains only in the movies, but this time on WanderLuxe, I am staying at India's first luxury train, which is amongst the top 5 luxury trains in the world, which has hosted the First Lady of India, American ambassadors, Lord King Chairman of the British Embassy, amongst the many other renowned dignitaries. This is the Palace on Wheels, where I will be staying at the super deluxe cabin, costing 12.4 lakh rupees, all inclusive, for a 7 nights splendid journey across Rajasthan. Let's get The Royal Palace on Wheels is India's first luxury train, which was launched on 26 January 1982 as an initiative by the Rajasthan Tourism Development Corporation along with the Indian Railways to give its guests mirroring images of Maharaja's pomp and elegance. And I visited some beautiful cities of Rajasthan and also went for a tiger safari in Ranthambore. So the train chugs out of New Delhi's Safdarjung railway station with a hospitable welcome. The train then proceeds for a 7 nights, 8-day journey across 8 heritage cities of Rajasthan, which includes Jaipur, Ranthambore, Chittorgarh, Udaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Bharatpur, Agra, and back to New Delhi. The train halts at each of these destinations for a couple of hours, where specially curated itineraries have been prepared for each destination. And as for me, I will be experiencing this journey for a couple of days to give you guys a quick ride into this regal wagon. So WanderLuxe is all about being OTT, just like my outfit. But do you like what you see? Let me know in the comments below. Okay, so where do I start? Actually, let me break down this video in different parts to give you a detailed experience of what goes around on the Palace on Wheels. Well, talking about the history, the Palace on Wheels is called as the mother of all luxury trains, as it was one of the first luxury trains to be launched in 1982 at a time when the price was 12,000 rupees for 2 people, to now starting with 8 lakh onwards and goes up to 12 lakh rupees for 2 people. This train right now is amongst the top 5 luxury trains in the world, mainly dating back to its royal past, as the coaches of these trains are coaches that were once used by the Maharajas of the princely states of Rajputana and Gujarat, as well as the Nizams of Hyderabad and the Viceroys of India.
This train is actually the fourth variant of the train, which is refurbished into a more contemporary model, yet keeping alive the old world charm. And that's why, if you notice, you won't find the typical 21st century modernized interiors, because why not keep the history and rustic authenticity of the royal past intact? And that's what makes it so luxurious in today's time. To the luxury aspect of it, the train has 22 coaches, out of which 14 are guest coaches, and interestingly, all of them are named after former Rajput states like Alwar, Bharatpur, Bundi, Jaisalmer, Jodhpur and more. So the train has 41 cabin rooms, out of which 2 are super deluxe cabins and the rest of them are deluxe cabins. This is my super deluxe cabin. I feel like one of those erstwhile monarchs traveling in absolute splendor. There's a lovely double bed with a tableside seating, a dressing table, a cute wardrobe with an electronic locker. But my favorite part is the bathroom. It's so spacious and comes with a glass shower stall. Having a hot water shower in here while you're traveling is a feeling that's absolutely unmatched. Now, these are some of the luxuries you can enjoy while traveling on a luxury train versus traveling on an outstation train in India. Well, adding to it, there's also a TV, intercom, Wi-Fi, amongst the other modern amenities. Now, the pricing for this starts with 1.7 lakh rupees for a night, making it a total of 12 lakh plus for a 7-night journey in Rajasthan. Now, I know you might think that you can get a lavish international holiday out of this price, but guess what? Some people actually pay for this to enjoy vintage royalty on a train. And this is the deluxe cabin. It's also very spacious and comes with all the modern amenities. And the pricing for this comes up to 8.7 lakh rupees for a 7-night journey. Well, if you thought you'll find 5-star luxury only in a hotel, well, guess what? Each coach has a personal attendant to attend to your beck and call should you need anything at any hour of the day. All you have to do is ring a bell. Wow, अच्छा. Well, this is truly an exciting journey to be a part of, because everything is taken care of for the price you're paying for. Accommodation, all-day dining, sightseeing, organized shopping, and all a traveler has to do is live a life of a Maharaja. Speaking of which, the train has 2 lavish restaurants, the Maharaja and Maharani. Both come in Rajasthani ambience. The Maharaja has blue, white and glass carvings, while the Maharani comes in gold, white and red decor. Both these restaurants serve lip-smacking continental, Indian, Chinese and Rajasthani cuisine. There's also silverware on the table, giving a taste of luxe authenticity. The train also boasts of 2 well-stocked bars, offering the choicest of spirits of Indian and international brands. Cheers. And some of the other facilities on the train includes a seating lounge and mini pantry outside every coach, where passengers can come sit and watch the cities glide past outside the windows, or enjoy a hot cup of tea along with some soothing piped music. Guests can also visit the spa, which comes with 2 spa rooms for a much needed therapy after a long day of exploration. Our minister at the time and the chairman railway board and our managing director, they were there in WTM, that is World Trade Mart in London. So they visited Orient Express. From there they conceived the idea, because at that time we were having the old saloons of erstwhile Maharajas. They were not in use. So we combined all these old saloons and made a train, named it Palace on Wheels. That was the idea conceived from there. The guests on board the Palace on Wheels boast of a large number of foreign travelers who want to immerse themselves in the world-class hospitality of India. There simply cannot be a better way to see this great and glorious nation than on the Palace on Wheels. This dream we had of coming here, and the wonderful thing about this dream is that it's every bit as good as I thought it would be. We've heard a lot about the Palace on Wheels for many years and decades, and
everyone had told us that this is one place that we should experience. A lot of foreigners do it, and an opportunity for Indians is rare, but we got the opportunity, we grabbed it, and we are enjoying it fully. This royal wagon is also known to cast its spell through heartwarming hospitality, state-of-the-art en-suite amenities, and meticulously curated itineraries across the land of the sand dunes, forts and palaces. The train also provides more facilities on board. As for the destination, it proceeds to every single day. And as for my 3-day journey on board, I got to enjoy some heartwarming experiences at these destinations. Check it out. So after exploring the historic and iconic forts and structures of Jaipur, this morning we have reached Savai Madhopur to get a glimpse into the life of wilderness. We will be taken for a tiger safari at the Ranthambore National Park, which is India's finest tiger reserves. Now all these sightseeing activities, including personal guides and travels, is all taken care of. And many a times across these 7 destinations, guests are treated with top-class dining locations at the respective cities, which would otherwise be very heavy on the pocket, is now a part of the journey's itinerary. So after reaching Savai Madhopur, we explore the mighty jungles of Ranthambore Tiger Reserve to get a spotting of the mighty wildcat. Well, wildlife spotting is a game of patience, and we're currently waiting to get lucky to spot a tiger. Fingers crossed. While we did not get a chance to see the tiger, I truly loved immersing in the beauty of the jungle. And after a gorgeous morning inside the jungle, we headed for a song and light show at the Chittorgarh Fort, which was absolutely breathtaking, understanding the culture and history of Chittorgarh. Coming down to my last departing words for the exquisite palace on wheels is nothing but traveling through luxury, royalty, supreme hospitality and top-of-the-line services. And having conversed with so many international travelers on board, I can only say I feel so proud to be an Indian for everything we have to offer, just like this train. I hope you got a detailed virtual experience of this luxurious voyage on board. Until then, this is me, Bianca Saurashtri. I will see you soon with many more Lux experiences. भाई इंडिया की जो है ना, अगर अभी भी जो हाई स्पीड ट्रेनें देखी जाए ना, वो भी जो है ना किसी से कम नहीं, लेकिन जो है लग्जरी ट्रेन्स की बात की जाए, क्योंकि इससे पहले हमने महाराजा एक्सप्रेस भी देखी थी एक दफ़ा, तो अब हमने पैलेस ऑफ व्हील देखी है। तो लग्जरी ट्रेन्स की बात कीजिए भाई, आउटस्टैंडिंग है। हालांकि किराया बहुत ज़्यादा है, लेकिन वे भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। देखो वो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है ना, जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करने के बाद उनको अपना इंजॉय करना लाइफ को, हमें वो सारे लोग नज़र आ रहे थे। सही बात है, इसलिए तो मैं शुरू में वो फंस गया था 12 लाख रुपए पे टिकट बताते हुए। मुझे ऐसा लगता है ना, लाइफ में थोड़ा सा आपका इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर आप कुछ फेजेस में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो कुछ फेजेस में जाकर आपको ना एंजॉय करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये मैं कहूँगी कि आप हमेशा ये बात सुनते भी हो कि आपको दुनिया घूमनी चाहिए, आपको डिफरेंट लोगों से मिलना चाहिए, आप लाइफ में बहुत कुछ सीखते हो। और जैसे पैलेस ऑन व्हील का एक आइडिया जिस तरीके से उनको आया, मुझे ये चीज़ है कि अगर मतलब मे बी उस टाइम पर ना आता, जैसे 1982 में स्टार्ट हुआ, वो यूके ना जाते, वहाँ पर ना देखते, लेकिन ये कि आप जितना एक्सप्लोर करते हो दुनिया को, आपको उतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में होता है कि नहीं हम लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि बहुत ही एक खूबसूरत ट्रेन, और आपको वाकई में उस रॉयल्टी का एक हम कहेंगे कि टच नज़र आता है, जो कि जिस तरीके से जिस थीम पर बनाई गई है, चाहे वो फिर अमेनिटीज़ के लिहाज से बात करें या फिर हम उसको ट्रैवल के लिहाज से बात करें, जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छा है। वैसे मुझे स्काई ब्लू कलर वाला बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो बहुत ही सूदिंग कलर लग रहा था। हालांकि जब रॉयल्टी की बात आती है तो मरून कलर जो है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन मरून कलर, ये बड़ा रॉयल्टी में आता है। लेकिन अभी मुझे ना
स्काई ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी खाने की बात करें या फिर भाई बेडरूम की बात करें, लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था किसी 5 या 7 स्टार होटल में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं उसी तरीके से एक मतलब बेड और हाँ पूरा सेटअप, वॉशरूम। वैसे एक्चुअली में मुझे वॉशरूम अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत अच्छा बना हुआ था, क्योंकि ट्रेन में आपकी एक्सपेक्टेशंस इस तरह से नहीं होती। अभी मुझे ट्रेन वाला वॉशरूम याद आ गया है तो मतलब बहुत ही वो वाला अजीब सा होता है, लेकिन ऐसे आपको सेपरेट वॉशरूम मिल जाए भाई। तो जो लोकल ट्रेन होती है ना वहाँ पे लोटा भी जंजीर से बंधा हुआ होता है, ठीक है ना। ट्रेन की बात भी कर रही। मैं क्या नाम लेते हैं एसी क्लास की बात कर रहा हूँ, उसमें भी लोटा जो है ना वो जंजीर से बांधा होता है कि कोई उठा के ना ले जाए, ठीक है ना। क्या मैं बोलूँ, लोगों के ट्रस्ट नहीं है ना, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है हमें। तो एक्चुअली मैं कहना ये जा रही थी कि लाइक वो जो वॉशरूम की एक फर्स्ट लुक आई ना, हमें लग ही नहीं रहा था कि आपको ट्रेन में ऐसा वाला वॉशरूम मिले। यार मैं तो ओवरऑल अगर बात करूँ ना तो सबसे पहले तो जिस तरह आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों ना इंडिया में इस सर्विस को शुरू किया जाए। हालांकि एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो है ना जो एक ट्रेन का स्ट्रक्चर जो बनाया टोटल, उसे जो है ना एक शाही निज़ाम सॉरी वो स्ट्रक्चर को रखते हुए साथ साथ कल्चर को भी जो उसमें उतारा गया, जो उस एरिया का है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि अगर लग्जरी ट्रेन की बात करें, क्योंकि यूके की लग्जरी ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी हैं, वो मैंने 1-2 ब्लॉग्स देखे हैं अभी रिसेंट टाइम में उसके, तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। लेकिन वहाँ के मुताबिक जो है उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन इंडिया में अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत है। खासतौर पर इंटीरियर की बात करें, महाराजा एक्सप्रेस की बात करें या पैलेस सर्विस, क्योंकि ये 2 लग्जरी ट्रेन का मुझे पता है, तो इनके इंटीरियर ना वाकई आप इसमें इनके बैठे जो लोग होंगे उन्हें तो आती होगी, लेकिन देखने वाले को भी ना एक फील आती है कि भाई एक रॉयलिटी आपको जो है वो मिल रही है। फिर उसके बाद जो है वाकई में इंटीरियर जो बेडरूम का है या वॉशरूम का है, आपको कहीं से ये चीज़ महसूस नहीं होती कि आप जो है किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपको स्पेस एक इतनी अच्छी जो है वो दे दी गई हुई है। उसके साथ साथ जो है जो बीच में एमिनिटीज़ आपको मिल रही हैं वो इस तरह की हैं। अच्छा, मैं ये बोलूँगी कि मोहम्मद जैसे बात की कि इसने रिसेंटली यूके की जो ट्रेन्स हैं उनके ब्लॉग्स देखे हैं, बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप जितना मर्जी मॉडर्न लाइफ में आ जाओ, आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको विंटेज जो चीज़ें हैं वो भी बड़ी पसंद आती हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं विंटेज लुक बहुत अच्छी लगती है, और इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है ना कि इसमें इसका जो कल्चर है वो हम लोगों को नजर आ रहा है और वो ही इसको ज़्यादा स्पेशल बना रहा है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि जो राजा महाराजाओं का जो एक एसेंस है ना वो कभी ना ख़त्म होने वाला है, यानी कि कोई भी टाइम आ जाएगा ना जब लोग उसको दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि वो एक डिफरेंट ही आपको एक्सपीरियंस देता है। इससे पहले हम लोगों ने रामायण जब यात्री थे जो रामायण एक्सप्रेस देखी थी, तो उस टाइम पर मतलब वो भी हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर वो किस तरीके से जो मतलब थीम है उसको ही वो डेडिकेट की गई थी सारी कोचेस। लेकिन अगर रामायण एक्सप्रेस में बात करें उसमें तो सिटिंग अरेंजमेंट था ना, यानी कि बर्थ थी पूरी। नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि देखो कि ये एक जो है प्रॉपर रॉयल्टी को डेडिकेट की गई है कोचेस, तो वो उसी तरीके से बनाई गई हैं। तो वैरायटी ऑप्शंस आपके पास कितना है कि अगर यात्री जाना चाहते हैं तो वो किस तरह की ट्रेन्स पर जा सकते हैं, अगर लोग अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं या वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इसमें एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जहाँ जहाँ पे इसका हॉल्ट होता है वहाँ पर जिस तरह स्वागत किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि चढ़ते वक्त भी उतरते वक्त भी। फिर उसके बाद जो है जो आसपास के एरियाज हैं उन्हें जो है घुमाया जाता है, ठीक है, एक्सप्लोर करवाया जाता है। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी लगी है इस ट्रेन की और इसकी मैनेजमेंट की। और मुझे ये भी अच्छी लगी कि सब चीज़ें बीच में इंक्लूडेड होती हैं, भाई आपको कोई अब वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि भाई मुझे लगता है कि काफ़ी महंगा एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बड़ा सस्ते वाला एक शौक है, महंगा शौक है। सो आई थिंक इसके लिए बहुत ज़्यादा जिनको ये एक एक्सपीरियंस करना हो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो ना पंजाबी में कहते हैं ऐसे शौक ने खरबंडू चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा नोट चाहिए होता है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर वही बात आ जाती है, अपने अपने शौक की बात आ जाती है कि आप कैसा लाइफ में एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। एनीवे गाइस, आप ज़रूर बताइएगा कि आप में से, क्योंकि आप लोग इंडिया में रहते हैं, तो आप लोगों में से कितने लोगों को शौक है कि आप इसका एक्सपीरियंस करें, या कभी आपने अपनी बकेट लिस्ट में रखा हो कि मैं आने वाले टाइम में ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करूंगा। ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। इसके साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।